Assalamualaikum, welcome back. I'm Sara from SARA MEER.com. I'm an IT graduate who's been working in the field of education to improve the quality of education in Pakistan. Before we begin on today's video, I would like to thank all of you for loving the content that I'm putting up on behalf of Kifayat. We all are in this together to teach smartly and to improve our education system. So, in today's video, we will be discussing in depth the subject English of the class Senior Infant. Senior Infant is commonly known as the class Kindergarten or the class Prep. So all the other subjects in this level have already been covered and the link to that is on the top right corner or in the description box down below. उस वीडियो में उर्दू को एंड मैथ को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है क्योंकि बड़ी क्लास है तो नर्सरी के मुकाबले में कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा है. The books are great and I have covered all the concepts step by step. So please go ahead and watch that video if you haven't already. So let's dive into English. Here we have in Senior Infant one workbook, 2 phonic readers, 2 sight readers, and 1 book of rhymes. So let's begin with our workbook. This is the cover page. These are the table of contents. Do not forget to take a screenshot so you will have a better understanding of what are all the contents that are covered in this workbook. In this level, the class prep or the kindergarten, इसमें हम फोकस करेंगे टू रीइंफोर्स ऑल द 26 लेटर्स फ्रॉम ए टू जी एंड इस लेवल पे अब कैपिटल लेटर्स भी सिखाए जाएंगे जो कि जो इससे पिछली क्लास थी नर्सरी उसमें हमने नहीं सिखाए थे एंड द रीज़न बिहाइंड डूइंग इट दिस वे इज़ सॉलिड. You know, I have followed all the international curriculums and उसमें यही pattern follow होता है and I have used this way of teaching where you teach the child the small letters first and then you teach the capital letters later. अच्छा अब because this book किफ़ायत की जो English की my book of sounds है, this is also in link with the C.J. Fallon philosophy from Ireland. So this is why you will see that international pattern जो बाहर की बुक्स में है वो इन बुक्स में भी आपको देखने को मिलेगा. बट अगर आप साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाह भी रहे हैं कैपिटल लेटर्स तो जस्ट मेक श्योर कि यू आर यूजिंग 2 different mediums. यानी कि एक मीडियम फॉर इंस्टेंस यू कैन यूज ए चार्ट टू टीच द चाइल्ड कैपिटल लेटर्स एंड उसमें फिर आप उसको सॉन्ग के थ्रू सिखाएं, ठीक है, एंड पॉइंटिंग टू ईच लेटर. अब अगर आपने स्मॉल लेटर्स सिखाने हैं ना तो डोंट यूज द सेम चार्ट, use another medium. That's what I'm talking about. So you can either use flashcards small letters सिखाने के लिए or you can just use a laminated sheet like this जो कि आप घर में भी बना सकते हैं. Just take a print out and laminate it and इसमें फिर आप बच्चे को small letters सिखाएंगे. So letters इस लेवल पे उस सेम सीक्वेंस में सिखाए जाएंगे जो कि नर्सरी लेवल यानी कि इससे जो पिछला जूनियर इन्फेंट लेवल था उसमें सिखाए गए थे. सबसे पहले हमने सी लेटर सिखाया बच्चे को, उसके बाद अगले लेसन में इन द नेक्स्ट वीक वी taught the child the letter A, then it was N, then S, then I, then T. So ये जो same sequence है letters को सिखाने का, the good thing is कि senior infant level में बिल्कुल वही sequence follow किया जा रहा है. So I'm going to flip through some pages in the book and I will show you guys कि किस तरह से एक lesson डिज़ाइन किया गया है and then यही पैटर्न you guys will see in all the lessons in this book. बिल्कुल जूनियर इन्फेंट्स की तरह एक लेसन 4 पेजेस में डिवाइडेड है. यू बिगिन बाय प्रैक्टिसिंग द बिगिनिंग साउंड्स. रिमेंबर टू यूज ऑल द मटेरियल्स लाइक लेटर मैनिपुलेटिव सी और अ कट आउट फ्लैश कार्ड्स एटसेट्रा दैट आई हैव शोड यू इन डिटेल इन द नर्सरी इंग्लिश वीडियो. पहले हैंड्स ऑन लर्निंग एंड वर्बली एक्सप्लेन करना है एंड देन यू विल डू दिस पेज. नेक्स्ट द चाइल्ड विल लर्न द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स ऑन 4 लाइन्स. So in kindergarten, the focus shifts towards middle and ending sound recognition. इससे पिछली क्लास नर्सरी में हमने beginning sound and थोड़ी बहुत ending sound सिखाई थी. Next page then have more writing practice of the letter and नीचे पर we have an exercise to learn words. Missing letters होंगे, जैसे इसमें beginning letter missing है तो आप बच्चों को पहले बोलेंगे कि word को segment करो verbally. खौफ है तो break it into sounds like ख or p. Okay, or and p तो already है तो शुरू किससे हो रहा है word ख से. So the child will then write ख in the blank. Next page में इसी तरह more words, spellings and vocabulary build होगी differently represent करके जैसे यहाँ पे matching के through सिखाया जा रहा है. And at the bottom here is my absolute favorite part. So this part at the end of each lesson, which is my favorite part, इसमें the child will explore different word families through rhymes. So what are word families?
So you don't need me to explain it to you, or you don't need to Google what word families are. You don't need to look for ideas on how to teach word families. It is because it is all there at the bottom right corner. सारी instructions मैं आपको दे दी गई हैं. It will make your life a lot easier. These instructions will support the learning process and assist in creating an effective phonics environment. So for instance, यहाँ पे जो पहली instruction है that says your child will be learning the letter C this week. Ask him or her to find the letter C in the poem and circle it. अच्छा, अब पोम या तो आप बच्चे को बोलें कि वो खुद कोशिश कर सकता है कि वो खुद उसे पढ़े, जहाँ जहाँ फिर वो रुकता है, अटकता है, वहाँ पे फिर द टीचर विल असिस्ट हिम. नहीं तो आप भी पढ़ सकते हैं. अब अच्छा, बच्चा नर्सरी में ऑलरेडी फोनिक्स उसकी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, बिल्ड हो चुकी है, रीडिंग स्किल्स उसकी काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं, तो इस पोम को काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं इस पोम में वो ही कैन ईजिली रीड. अच्छा, वंस द चाइल्ड इज डन रीडिंग द पोम, देन द टीचर विल आस्क हिम नाउ सर्कल ऑल द सीज इन दिस पोम. क्योंकि ये लेसन सी का है तो इसमें फिर बच्चा सारे जहाँ जहाँ उसको सी नज़र आ रहा है उनको वो सर्कल करेगा. And the next instruction then is brainstorm words ending in app. So this is the first word family जो आप बच्चे के साथ डिस्कस करेंगे. So what you do is कि आप बस सब कुछ आप रख दें, verbally आपने बच्चे के साथ डिस्कशन करनी है कि अच्छा चलो आप हम सोचते हैं मिलके कि ऐप में कौन कौन से वर्ड्स एंड हो रहे हैं. अच्छा, एक दो वर्ड्स तो हमें इस पोम में भी नज़र आए थे, लाइक nap. Nap ends in app. अच्छा, और क्या है? दिन बच्चा भी आपके साथ सोचेगा. Then he might come up with some words like cap, like map. इस तरह से brainstorm some ideas. And then इसी तरह से फिर आगे बारी बारी करके आपने बाकी जो गेम्स हैं बच्चे के साथ खेलनी है until he is very confident in this word family. So these elements play a vital role in developing children's reading skills extensively. So तकरीबन इसी तरह से सारे lesson design है. Now do you remember the cluster method that we talked about in the class nursery in the junior infant level? उस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. So shortly it is cluster method ये है कि पहले 6 letters जो हैं वो इस तरह से चूज़ किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट 6 लेटर्स द फर्स्ट 6 लेसन्स में जो सिखाए जा रहे हैं, 6 हफ्ते लगेंगे रिमेंबर इनको सिखाने में. पहले हफ्ते में सी सीखा, ख उसकी साउंड एंड ऑल द अदर थिंग्स, बिगिनिंग साउंड, मिडल साउंड, एंडिंग साउंड, सब कुछ सीख लिया. द नेक्स्ट लेसन में ए, देन एन, देन एस, देन आई, देन टी. तो जब ये 6 लेटर्स बच्चे ने 6 हफ्ते में कर लिए, काफ़ी सारी उसमें प्रैक्टिस भी कर ली, बिगिनिंग साउंड, मिडल साउंड्स और क्या क्या वर्ड्स उनसे शुरू होते हैं, एंड होते हैं, ऐप फैमिलीज, इस तरह से और भी जो फैमिलीज वो भी कर ली. इसके बाद फिर एक रिविजन पेज आएगा दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस. सो हियर द चाइल्ड विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हिज रीडिंग स्किल्स. The child will also be ready to read the phonics readers. The phonic readers reinforces the sounds learned and gradually introduces children to reading 4 to 6 letter words. There are 4 readers including 2 phonics readers and 2 sight readers. So each reader has 4 stories like this: book 1, book 2, book 3 and book 4. So this provides a total of 16 captivating stories for the children to enjoy. So जैसे जैसे बच्चा प्रोग्रेस करता जाएगा, he will be ready to read all the readers one by one. We also have this my book of rhymes that I showed you in the beginning. So इसमें अब वो सारी कलेक्शन है उन rhymes की जो कि बच्चा ऑलरेडी वर्कबुक में साथ साथ कर रहा है. So for instance हमने जैसे एक rhyme की थी Sal's nap. So look how beautifully it is illustrated in this book, so the child can enjoy reading these rhymes independently as well. So that's about it. Now let me quickly show you an insight on some more pages from the book. Choose and fill in the missing words. Look at the pictures and complete the words with eh or a, e or I. Look at the pictures, say the word, color the bricks with the o words. Read, draw and color. So as the child progresses through the book, they are given opportunities to make small sentences and paragraphs of around 3 to 5 lines. So this writing practice nurtures their language skills and encourages independent expression. इसके अलावा at the end of the book 7 phonograms भी सिखाई जा रही हैं. For instance, CH की first sound sh, then we have CK की sound, we have double O की 2 sounds, double E की sound, WH की sound and so on. And in सब
लेसन्स को अच्छा खासा डिटेल में बनाया गया है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के पहले वाले लेसन्स डिज़ाइन थे. बच्चा इनको वर्ड्स में भी प्रैक्टिस करेगा, इनकी सेंटेंसेस में भी प्रैक्टिस करेगा इन द बुक एंड ऑल्सो इन द रीडर्स. So that was all for English of senior infant level. If you want to aid your child with additional resources, then go to kifayatpublishers.com, log in as a parent. It's completely free. There you will see a lot of videos. उसमें बच्चे को लेटर की फॉर्मेशन भी सिखाई जा रही है, लोअर केस एंड अपर केस सेपरेटली. There are songs for the letters as well, and also कि उनकी phonics साउंड क्या निकलती है. The good thing is कि बच्चा क्योंकि लेसन में जिस फॉर एग्जांपल जो लेसन सी कर रहा था, अब उसमें आप उसको लोअर केस फॉर्मेशन भी सिखा सकते हैं वीडियोस देख के, अपर केस भी सिखा सकते हैं. देन द सी का फिर एक सॉन्ग भी है, एंड बुक में यू नो कि देयर इज अ कैरेक्टर ऑलवेज लिंक टू ईच लेटर. तो देन द चाइल्ड विल सी दैट कैरेक्टर in that video in action, so this will only increase the child's interest in the lessons. So please go ahead and make use of those free resources that Kifayat has provided for you all. इसके अलावा if you guys are interested in buying these books, then Kifayat has made it really convenient now by placing all of their books on Daraz. I'm going to share the link of Daraz in the description box and down below. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.